Hello students, welcome back to Sociology with Radhika. Please subscribe my channel. Let's begin. So today we are going to study about caste. If you remember, earlier we have started the social institutions. We have started the chapter. We have done the introduction. Now we are going to do caste. Okay, the caste and the caste systems in sociology. So guys, caste is a term which is derived from the Portuguese word casta, which means pure breed. Okay, pure breed means we can say which is very pure. Okay, like Portuguese word में इसको बहुत pure माना जाता है इस word को. In other words, it also means a group or community. Caste is a kind of group or community of people which belong to a particular, particular caste, right? Particular community, particular group, जिनके एक ही we can say कि जाति है, एक ही वर्णा से जो लोग belong करते हैं. The word refers to a broad institution. जैसे आपको पता है कि हम institution के बारे में पढ़ रहे हैं. So it's a broad institutional arrangement that in Indian language, beginning with the ancient Sanskrit word. Okay, पहले इसको संस्कृत word से जाना जाता था by two distinct terms से जाना जाता था, that is varna and jati. And varna and jati को ही caste कहते हैं काफी लोग, इससे we can say interchange, it can be used interchangeably, but they are different terms and some it is a kind of, we can say, it depends upon the rigidity, how rigid the word is. So from paper point of view, आपको पेपर में क्या लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है, उसके रिगार्डिंग दिस इज द बेस्ट. कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये सब इंडिया में ही ज्यादा माना जाता है. कास्ट सिस्टम, कास्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट एन इंस्टीट्यूशन जो कि हिंदू सोसाइटी में सबसे ज्यादा माना जाता है. एंड सिंस हिंदू मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, सो इट हैज स्प्रेड टू मेजर नॉन हिंदू कम्युनिटीज एज वेल. सो आजकल बहुत सारी और कम्युनिटीज में भी इस चीज को माना जाने लगा है. सो आई हैव गिवन द एग्जांपल्स एज वेल. ओके, so this is all about caste, which you have to study only the meaning, we can say. This is just the introduction part. Now we will see how caste is different from varna, but first we have to explain what is varna system. Okay, so varna literally color. Varna ka means the color, is a name given to a fourfold division of society into Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudras. You can see the table here. Okay, so क्या होता था पहले? पहले जो सोसाइटी है वो चार वर्णास में बटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. सो these four divisions, we can say, the four varnas are so much rigid that a significant section of population, ये है ना यहाँ पे लिखा है, ऑफ द उनको आउटकास्ट माना जाता था. लाइक जो ब्राह्मण्स हैं, दे कैन नॉट इवन ईट द फूड ऑफ कास्ट ऑफ क्षत्रियास कैन नॉट दे कैन नॉट इवन, इनफैक्ट जो अनटचेबल्स अगर हम बात करें जो सबसे लास्ट में है, दीज अनटचेबल्स, इनके साथ तो मीन्स अगर टच होना भी, अनटचेबल्स क्यों कहा जाता था, बिकॉज इनके साथ टच होना भी बहुत गलत माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था. इनके घर का खाना खाना, इनके घर का पानी पीना, और there are some food restrictions, there are some marriage restrictions. You cannot marry in the lower caste. In fact, Brahmins तो सबसे टॉप में माने जाते थे, and they cannot even choose the occupation which Kshatriyas have chosen, which Vaishyas have chosen. So this is how it works. I mean, पहले इस तरह से होता था. Okay, पहले बहुत रिजिडिटी होती थी. So like सबसे लास्ट में जो यहाँ लिखा है that outcast, foreigners, slaves, conquered peoples, उनको तो इस कैटेगरी में रखा भी नहीं गया है. ये जो 4 डिवीजन है ना, इससे भी नीचे ये वाला आपको सेक्शन दिख रहा है ना, दिस पार्ट, दिस इज फॉर उनसे भी नीचे जो शूद्रास होते थे या जो अनटचेबल्स होते थे, हाँ, जिनको आउटकास्ट कहा जाता था कि वो तो इस कैटेगरी में भी बिलोंग नहीं करते. एंड उनको इतना गलत, इतना नीचा देखा जाता था, और उनको बहुत ही ऑक्यूपेशन भी वो दिया जाता था, जैसे स्वीपर्स का, जैसे बहुत वैसा जो बाकी जो कास्ट है, बाकी के 3 कास्ट या 4 कास्ट, ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे उस तरह का ऑक्यूपेशन. ओके, सो दिस इज हाउ वर्ना सिस्टम was in the earlier society. Okay, in the we can say the earlier system. Okay, now let's move towards other next slide, that is about jati. So what is jati?
Jati is a generic term referring to a species or kind of anything, ranging from inanimate objects to plants. Okay, this is not regarding to a particular community or particular, we can say human beings. This is related to plants, animals, and human beings. Uski jati, iski jati. It is a word most commonly used to refer to the institution of caste in Indian language. हम बोलते हैं ना कि कौन सी जाति का है. आपने अभी सुना होगा अपने पेरेंट्स को कभी कहते हुए कि ये बोलते हैं कि किस जाति का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है. तो इंडियन लैंग्वेजेस में ये काफी सुना जाता है. दो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इंक्रीजिंगली आजकल जो इंडियन लैंग्वेज स्पीकर्स आर बिगिनिंग टू यूज द वर्ड कास्ट. तो उसकी जगह ये जो वर्ड है कास्ट यूज होना शुरू हो गया है, बिकॉज इट लुक्स लिटिल बेटर एंड जाति डोंट लुक, क्या जाति है. और प्लस आप उसको डाउन उससे देखते हैं जब. सो पहले जेनरिक टर्म थी जाति, जो ज्यादातर रेफर की जाती थी. इट कैन कम इन योर एग्जाम बट इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट इट अदरवाइज मोस्टली मोस्ट ऑफन ये नहीं आता है. ठीक है, सो let's move towards our next slide. So this is how caste and varna, I just wanted to make you understand. So what is the difference between caste and varna, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, and this difference you should know. Okay, so yes, so caste, first of all we will study caste and then varna. जैसे हमने पढ़ लिया अभी, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा. caste is a closed system. हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट इज अ वेरी क्लोज सिस्टम. वन कास्ट, अपर कास्ट के जैसे अभी आप बोलेंगे कि एक शर्मा है और ये दूसरा गुप्ता है और ये खत्री है और कोई भी कास्ट, इसको इस तरह से देखा जाता है कि यू कैन नॉट इवन इंटरफेयर इन देयर मैटर्स. And but on the other hand, it is an open system. Varna means still we can move from one to another. They used to, what they used to do in Varna system, they used to, it is a kind of Vedic period में ये माना जाता था Vedic period में, और वहां पे थोड़ी सी flexibility थी. वहां पे ये थोड़ा open system था, and there is a flexibility of moving from one Varna to another. They can in fact choose occupation of one Varna to the another. They can choose, but in caste system you cannot choose. So it is kind of, it started from post Vedic period. Okay, now there are 3000 caste and subcaste. अब तो और भी ज्यादा है. सब कास्ट भी बहुत सारे हैं, कास्ट के अंदर भी कास्ट होती है. एंड फोर वी हैव टोटल 4 वर्णास वी कैन से. हाँ, आपने पढ़ाई अभी ब्राह्मण, आई कैन नॉट राइट, आई गेस क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, इनके बारे में अभी हमने पढ़ा. So these 4 varnas are there, and there is no further subdivisions. But in caste there are subdivisions. ब्राह्मण्स में अगर हम बात करें कास्ट में, तो कौन सी शर्मा आ जाती है, देन we can say थापा आ जाती है, राणा आ जाती है, बहुत सारी कास्ट आ जाती है. तो देयर आर कास्ट एंड सब कास्ट. वैसे ही महाजन्स में गुप्ता आ जाती है, और भी बहुत सारी कास्ट आ जाती है, सब कास्ट. नो सोशल मोबिलिटी इज देयर, but there is social mobility. So now what is social mobility? Mobility is movement from one caste to another. You can move, you cannot move, no social mobility, but there is social mobility. One varna to another you can move. Okay, so this is very rigid, but this is not rigid. Okay, this is not as much rigid in pre with Vedic period we can say, but in post Vedic period when caste system came, you cannot, it is very rigid. One caste do not want other caste to interfere in their culture, in their religion, or in any system. This is how it works. Okay, so let's move towards another slide. I hope this difference is clear. Okay, now just the caste system in your syllabus. The next topic is features of caste system. In this we will study what are the, this is very important topic you should know, in the which usually come in board exams. Features of caste system, what are the characteristics of caste system. This can come like this, and or one of the, you can explain one of the characteristics after writing all the characteristics of caste system. So caste system में क्या features है, how it is ascribed status we can say. What is ascribed now? Okay, ये खुद ही नेक्स्ट स्लाइड आ गई. बट फर्स्टली हमें क्या करना है, अगर वन बाय वन आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो एस्क्राइब स्टेटस क्या है? एस्क्राइब वो स्टेटस होता है जो आपको बाय बर्थ मिलता है, विच यू कैन नॉट चेंज. ओके, दैट इज एस्क्राइब स्टेटस विच इज imbibed, which is given to you without any, we can say, which is
involuntary. It is not voluntary. You cannot accept the ascribed status. So caste is like that only. It is determined by birth. Once you are born into a particular caste, so it is given to you. इसमें annotation में ये नहीं आएगा. Okay. So it's not visible. तो मैं ऐसे बताऊंगी. It is determined by birth. A child is born into a caste of its parents. Caste is never a matter of choice. One can never change one's caste, है ना? नहीं छोड़ सकते हो आप उसको. और it is permanent. You cannot join it. You cannot lose it. Okay, it is permanent. Okay. So this is how it is an ascribed status. हमेशा याद रखो. एक होता है statuses are two types, ascribed and achieved. I hope मैंने क्लास 11 में आपको ये पढ़ाया है. अगर नहीं तो आप अपनी क्लास 11 की वीडियोस देख सकते हैं स्टेटस के बारे में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटस, ascribed and achieved. Ascribed is that which is determined by birth and which is given to you by birth only. Okay. Achieved is what you achieve in your life. That become your achieved status. You can change your achieved status. It is voluntarily. It is not involuntary like ascribed status. Okay. Then comes hierarchy of rank and status. So in caste, there is hierarchy. मैंने आपको जैसे बताया, caste involves a system consisting of many castes arranged in hierarchy of rank and status. There are sub-castes as well, and there is hierarchy. आप एक रैंक जो है, एक कास्ट का रैंक दूसरे कास्ट को नहीं दे सकते. In theory, every person has a caste, and in every caste has a specified place in the hierarchy of all castes. ठीक है? Means हर एक कास्ट का अपना अपना एक hierarchy रहता है. कोई ऊपर है, कोई नीचे है. ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता. सो यहाँ एग्जाम्पल दी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. दीज आर वर्ण. बट जस्ट अ सेकेंड. बट व्हाट इज, इसके अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारी हायरार्की और रैंक एंड स्टेटस है. ओके. नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो कास्ट सिस्टम में क्या है? इट इज देयर आर सेगमेंट्स, देयर आर सब कास्ट, एंड यू कैनॉट you cannot interfere or you cannot change it. Caste also involves subdivision within themselves. That is, caste always have subcaste, and sometimes subcaste may also have subcaste भी होती हैं. इसको हम बोलते हैं segmental organization. Means there is a structure in which a society is divided, in which a caste system is divided. So there are segments, fragmentations are there. Okay, this is the one of the other feature of caste. Then strict rules about marriage. There are very much strict rules of marriage. Means membership in a caste involves strict rules like they are endogamous. What is endogamous? Endogamous is marriage is restricted to the marriage of members of the group. You cannot marry outside your caste, outside your caste group. Yes, like if you are a Sharma, if you are a Brahman, if you are Gupta, if you are Kshatriya, you cannot marry the other caste. Like if you are Sharma, you cannot marry Gupta. If you are Khatri, you cannot marry Rana. So this is like that. Endogamous marriage. Endogamous means it is a closed system. We can say we have to marry within your caste only. Okay. There is one other term which is different from it. So you should not, that is your gotra. Okay. Gotra में endogamy नहीं होता है, exogamy होता है. I mean, you have to marry outside your gotra. So don't confuse between these two systems, these two types. Then rules about food and food sharing. There are rules like you have to take food from certain caste, but you do not have to take food from other caste. Like you can take only raw food from the lower caste. Especially this is practiced by the especially higher caste like Brahmins, okay, or like Sharmas, or like Ranas, or like these some kind of caste. Okay. Also, same is the case with occupations. Like, see, Brahmins were meant to be priests, teachers. Kshatriyas are meant to be warriors. Means पहले जो था उनको जो Brahmins है उनको बोला जाता था that you have to be priest. I mean, they have to be either teachers, either priests in a temple, or something like that. I mean, that occupation they can have. They don't have, they cannot be warrior. They cannot be, businessman, because it is meant for Kshatriyas. It is meant for businessman, is meant for Vaishyas. So Vaishyas have to be businessman or traders. उनको वही बनना है, वो कुछ और नहीं बन सकते. Like ऐसा होता था. ऐसा कब होता है? I mean, ऐसा नहीं होना चाहिए. This is another, I mean, my view, and this is the new generation's view as well. Shudras were meant to serve the rest. I mean, they have to serve. They have to be servant.
and do all the dirty work. As I told you, जैसे उनको साफ करनी है, सफाइयाँ करनी है, उनको sweepers हो सकते हैं, वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, but they cannot be businessmen, they cannot be teachers, they cannot be warriors. There was no mobility in terms of occupation. There is no mobility in terms of occupations. No, don't confuse yourself now with Varna and caste. Varna is a system, but caste is a subsystem in which जो ब्राह्मण्स हैं उनके अंदर जैसे कास्ट सिस्टम आ जाता है, डिफरेंट कास्ट आ जाती हैं, वो सिस्टम से आप समझिए, ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. So there are restrictions, there are occupational restrictions, marriage restrictions. So these are some of the main important features which you can write in your exam. If there is any doubt, do let me know. And yes, don't forget to like and subscribe my channel. And ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. And